ओके सो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री पोर्शन का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये स्लाइड चेंज हो रही है ना। ओके तो अगर इसको हम इंट्रोड्यूस करें टॉपिक को, यू नो अगर हम मिल्क को छोड़ दें at room temperature during summer, then what would happen? क्या होगा? हाँ चेंज हो जाएगा ना। देन लाइक ये आयरन का तवा है या पैन है, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा उसके ऊपर? रस्ट होना चाहिए। तो रस्टिंग है या वो जो चेंज है मिल्क टू कर्ड बोल सकते हैं। तो ये सारा क्या है? दे आर द केमिकल रिएक्शंस, राइट? grapes they get fermented, food is cooked, और जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन प्रोसेस जो है इन आवर बॉडी, इवन वी रेस्पायर, तो इन सभी में जो नेचर है और आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस है हैव समवट चेंज्ड। तो इसका मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो यू नो वी कैन से कि जब केमिकल रिएक्शन हो कोई भी, तो one form of the substance changes into another form, so that is called chemical reaction. Let us do one activity. तो एक्टिविटी करते वक्त टीचर असिस्टेंट से ही करना है, और सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास में। हैव यू डन इट? ओके, तो फर्स्ट वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper, and then we hold it with pair of tongs or burn it using a spirit lamp or burner, और उसकी अगर कलेक्ट ऐश करें ना वॉश ग्लास, इस तरह से होता है, वाइट शाइनिंग फ्लेम होती है इसकी, और इसको अगर हम जो इसका ऐश है उसको कलेक्ट करें तो इट इज व्हाइट इन कलर। तो क्या बनता है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इन दिस वे magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and it changes into white powder, और ये जो पाउडर होता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कैसे बनता है? बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। किसके साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम? मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें, it is like this: Mg
plus O2. Oh, एक मिनट बेटा। एक बार फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी, रुको। एक मिनट बेटा। ओके, तो मैग्नीशियम react with oxygen to give magnesium oxide. So now next activity, there is a test tube and this is potassium iodide solution. In the test tube there is lead nitrate solution. Potassium iodide lead nitrate के साथ when it reacts we get yellow colored solution. Have you done it? Okay, so the question reaction is potassium iodide plus lead nitrate. So it will give lead iodide along with potassium nitrate, and this lead nitrate is yellow in color. This is the balanced equation. So yellow solution, that is of lead iodide. Then first activity, magnesium when react with oxygen, we get magnesium oxide. This is activity 1, and this one is activity 2.
Okay. So now the yellow color precipitate of lead iodide is formed. Now next is this is conical flask. We put zinc granules in it, and then we have dilute H2SO4. When we add dilute H2SO4 in zinc granules, tell me what will happen? There is something else. Zinc granules, when react with H2SO4, that will produce hydrogen gas. There is a formation of bubbles, means there is a formation of a hydrogen gas, and at the same time it is an exothermic reaction, that is heat is given out and there is a change in temperature, and at the same time change of state. Reaction is like this. See, zinc granules react with H2SO4 to give zinc sulfate and hydrogen gas. So hydrogen gas is released. There is a formation of bubbles. Okay. Now change in state, change in color, evolution of a gas, change in temperature, formation of precipitates like lead iodide precipitates are formed. These are all form of chemical reaction. Now this solid can be converted into liquid by heating at its melting point, and solid can be converted directly into gas, and that phenomenon is called sublimation, right? And gas can be converted back into solid, that is called deposition, or solid into liquid, that is melting, and liquid into solid, that is freezing. Now liquid to gas, that is called evaporation, and gas back into liquid is called condensation. So there is a change in state. Now change in color. See, evolution of a gas, change in temperature, formation of precipitate. Now these are the ions. First is hydroxide, chloride, bromide, iodide, nitrate, bicarbonate, AlO2 negative, aluminate, Ag plus silver ion, Na plus sodium ion, H plus hydrogen, K plus potassium.
So if I would like to write sodium nitrate, what is the formula of sodium nitrate? Beta, nitrate. Sodium is Na plus in its compounds, and nitrate is NO3 negative, right? So 1 plus 1 negative. So sodium nitrate is NaNO3. Okay, got it? At the same time, to write magnesium nitrate. Yes, tell me. Mg2 plus NO3 negative. So in this case, valency of magnesium is 2. And what is valency of nitrate? 1. Valency is magnitude of the charge on it. Valency of magnesium is 2 and nitrate it is 1. So we crisscross. So formula is Mg NO3 twice. Okay. So what is the formula of let us say aluminium? Aluminium is 3 plus. So tell me aluminium nitrate. What is the formula of aluminium nitrate? See, magnesium nitrate is this one, okay? MgNO3 twice. Sodium nitrate is NaNO3. So at the same time, what is the formula of aluminium nitrate? See, you are right. The aluminium is 3 plus, NO3 is minus 1, right? So it is 3, 1. क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Al NO3 thrice. So that is aluminium nitrate. Okay. Al NO3 thrice. समझे? तो कोई डाउट है? मैग्नीशियम नाइट्रेट बोलो. और सल्फेट, व्हाट इज सल्फेट? SO4. SO4 आगे.
SO4 2 negative, right? So now, what is the formula of aluminium sulfate? Aluminium sulfate. Formula of aluminium sulfate. Al, very good. Al2SO4 thrice. Okay. Al2SO4 thrice because it is Al3 plus and SO4 2 negative. It is 3 2. So crisscross. It is Al2 SO4 thrice. Very good. अगर हमें बैलेंसी देखनी हो, जैसे नाइट्रेट पे NO3 पे -1 होता है ना, NO3 -1, तो ये NO3 पे -1 है, ये आपको ना, अगर आपको मान लिया, ये अभी तो याद ही रखना पड़ेगा, बट अगर हायर क्लासेस में आप जाओगे देन यू विल कम टू नो कि एक ऑक्सीजन एक ही नेगेटिव क्यों आया। तो नाइट्रोजन जो होता है उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग करी होगी ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। तो क्या हो जाएगा ये? 2 5। तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। और ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो इट इज 2 6। इसके पे 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो और कितने चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? नियोन तक पहुंचना है ना, 2। तो देखो 3 ऑक्सीजन इससे जुड़े होते हैं। अब एक नाइट्रोजन बनाता है डबल बॉन्ड, और ये टोटल इसके अपने, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन पूरा पेयर इसको दे देता है और इसके भी 8 हो जाते हैं। बट ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, ये एरो बताता है कि पूरा पेयर इसने दे दिया इसको, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए इस साइड, ये वाले, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। ये एरो दिखा रहा है कि ये नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ है। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ 6। 6 तो इसके अपने हैं, एक इसने किसी से लिया शेयर करने के लिए, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल NO3 जो है -1 इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन है 5। 5 में से 2 यहाँ यूज हो गए, एक 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसको मिला के ऐसे। बट इसका 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, तो इसके पास बचे कितने? 5, बट हम लिख रहे हैं 6।
क्योंकि 8 पूरे करने हैं तो एक माइनस आता है इसके ऊपर। वैसे ही अगर मैं सल्फेट की बात करूं, सल्फर और ऑक्सीजन एक ही फैमिली के मेंबर है, तो ये सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन में से आपको पता है सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेम वैसे 286 है, 16 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 पूरे हो गए इसके। देखो, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, तो 2 ऑक्सीजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड ही बनाया इसने, एक एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ ना, इसलिए इन के ऊपर जो है 6 करने के लिए इसके ऊपर भी माइनस, इसके ऊपर भी माइनस, इसलिए SO4 जो होता है वो होता है 2 नेगेटिव। इसमें तो इसके 8 पूरे हो गए, 2 इसने शेयर कर लिए और 4 इसके पास रहे, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इनके तो हो गए, पर इसके 8 करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, यहाँ इसको भी 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसलिए SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहता है। इट इज बियॉन्ड योर स्कोप, वैसे तो आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी ये सारे सबकी वैलेंसी आपको ऐसे याद करनी है, कर लोगे ये लर्न? ओके, तो देखो इन सबकी वैलेंसी क्या है? 2, और ये जो पीछे वाले थे इन सबकी वैलेंसी क्या है? 1। तो ये वैलेंसी चार्ट याद होना चाहिए आपको। कॉपर और आयरन, इन दोनों की क्या होती है? वेरिएबल वैलेंसी होती है। कॉपर 1 भी हो सकता है, कॉपर 2 भी हो सकता है, कॉपर 1 प्लस, कॉपर 2 प्लस, और आयरन 2 एंड 3। बट एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी फिक्स होती है, दैट इज 3। NH4 1 प्लस होता है हमेशा, अमोनियम की 1, लेड की 2, और यहाँ पे ये जो है ना कॉपर 1 प्लस, कॉपर 1 प्लस को क्या बोलते हैं? कॉपर 1 प्लस बेटा क्यूप्रस, और कॉपर 2 प्लस जो है वो क्यूप्रिक, और वैसे ही जो Fe2 प्लस है दैट इज फेरस, और Fe3 प्लस दैट इज फेरिक। तो मान लिया मुझे लिखना है क्यूप्रस क्लोराइड, तो cuprous chloride, cuprous is Cu1 plus, chloride is Cl minus, so that means cuprous chloride is CuCl। बट यहीं पे मुझे लिखना है क्यूप्रिक क्लोराइड, देन कॉपर इज 2 प्लस, Cl minus 1 is 2 1, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो इट इज Cu1
Cl2. So CuCl2 is cupric chloride. Same in the case with ferrous chloride and ferric chloride. So what is chemical equation? So it is a simple representation of a chemical reaction in words. That is called a word equation. For example, this magnesium react with oxygen to give magnesium oxide. So this is left hand side, that is Mg magnesium plus oxygen. These are reactants, and right hand side, this is product. And this arrow represent, it shows the direction from where it goes. So it starts from magnesium and oxygen and end with magnesium oxide. What it gives? A chemical equation जो है, that is a shorthand form for a chemical change. See, this is chemical, this is word equation, right? And chemical equation means you will write the chemical name. This is magnesium is Mg, oxygen is O2, to give magnesium solid, that is MgO. Left hand side is the reactants, and again this arrow represents the direction. So if number of atoms of each element on both sides is same, then it is balanced equation. As the equation is unbalanced, or we can say skeletal chemical equation. Right now it is a skeletal chemical equation because it is not balanced. On left side there are 2 oxygen, but on the right side it is only 1 oxygen. So above equation reaction, this is example of skeletal chemical equation. What are the steps involved in writing a chemical equation? First we write reactants and then we write products. So reactant is Mg solid, O2 gas, and product is MgO solid. So reactant is on the left side and product is on the right hand side. And reactants and products are separated by an arrow. And 2 or more reactants and products, they are separated by plus sign. And conditions are mentioned on the arrow. Like we heat it, so on the arrow we will write heat. And then reactant and product, to make reaction more informative, what we do, we write physical states. That magnesium is solid, O2 is gas, MgO is solid. So we will write the physical states as well. So जैसे यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, magnesium, tell me why we clean magnesium before burning? Already there is a, actually when we use magnesium ribbon, there are some impurities on it, and at the same time magnesium oxide is already on the surface, because when we take that magnesium in the air, that will react to some extent, and there is a layer of magnesium oxide on it. So we have to remove it first. We have to remove that layer from the magnesium ribbon, so that when we keep it on the burner,
there is a magnesium which it comes in contact with the flame. Okay, that's why we need to clean it first. And magnesium oxide, tell me, magnesium oxide, it is MgO, that is metal oxide. So what is its nature? This nature of magnesium oxide, is it basic or acidic or neutral? But metal oxides are always basic. So magnesium oxide is basic. Okay, ठीक है, magnesium oxide is base. Okay, and when we write that nitrate, oh sorry, see, HNO3 is, what is the nature of HNO3? HNO3 is nitric acid. So obviously it is an acid. Nitric HNO3 is an acid. So when it give H plus sign, तो जो बाकी बचा आपके पास इस नाइट्रेट, दिस इज बेसिक. याद रखना, नाइट्रिक HNO3 is acid and when it give H plus sign, क्योंकि एसिड क्या होता है, जो H plus देता है, H plus देने के बाद जो बचेगा आयन, that is basic. Okay, सेम सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट आयन इज बेसिक, नाइट्रिक एसिड इज एसिड. H2SO4 is sulfuric acid, it is acid. So sulfuric acid give H plus ion and we get sulfate. So sulfate is basic. तो याद रखना, जब भी एसिड H plus ion दे दे, उसके बाद जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, बेसिक. ठीक है, तो आज के लिए आपका मेन जो काम है वो क्या है कि आपको ये लर्न करके रखने हैं, ये सारे आपको लर्न होने चाहिए पहले. ये आयन सारे याद होने चाहिए आपको. हाइड्रोक्साइड, देखो आइड कब लगता है, जब देखो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. अगर मैं नाइट्राइड बोलूं तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए उसका, बता सकते हो? नाइट्राइड, तो यार नाइट्राइड इज N3 नेगेटिव. ये सिंगल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आइड लगता है, ऑक्साइड तो O2 नेगेटिव. फॉस्फाइड, तो फॉस्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव. अब आप बोलोगे 3 नेगेटिव ही क्यों, कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15. उसकी नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होती है, 18, आर्गन. तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना उसको, इसलिए 3 नेगेटिव. सेम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7. उसकी नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी होती है, 10, नियोन, अगेन 3. ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, नेक्स्ट नोबल गैस 10. तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 नेगेटिव. तो इस तरह से मुझे बताओ कि सल्फाइड अगर मैं लिखूं तो व्हाट इज द चार्ज ऑन सल्फाइड. यस बेटा, सल्फाइड, यस, S2 नेगेटिव, सॉरी, it is S2 minus.
दैट इज सल्फाइड। सेम क्लोराइड है तो क्लोरीन की बात करोगे तो एटॉमिक नंबर क्या है 17, नेक्स्ट नोबल गैस है 18, तो Cl माइनस हो गया। ब्रोमाइड में 35 होता है, उसका नेक्स्ट नोबल गैस होती है 36। चलो ये तो ऊपर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइन की सीरीज है ना ये। फ्लोराइड पे क्या चार्ज होगा बताओ। फ्लोराइड फ्लोराइड पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्लोरीन का 9, और उसकी नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है नियोन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे एक, तो फ्लोराइड क्या हो गया -1। तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड सब पे -1 है। ठीक है, नाइट्रेट सल्फेट कार्बोनेट क्रोमेट, देखो सल्फाइड ऑक्साइड तो लिखा ही था इसमें ना, जिंकेट बाइकार्बोनेट एल्यूमिनेट हाइड्रोक्साइड कैडमियम कैल्शियम मैग्नीशियम मर्कुरी जिंक बेरियम। ये सारी वैलेंसी चार्ट लर्न कर लेना, नेक्स्ट टाइम इसको हम अच्छे से करेंगे मॉड्यूल 3 में। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। कल सेम टाइम पे 9 o'clock चलेगा। ओके, तो कल भी 9 बजे मिलते हैं। ओके, वेलकम। तो ठीक है बेटा, एक चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10। कल मिलते हैं कितने बजे 9 बजे। ठीक है, सेम चैप्टर के साथ इससे अगला टॉपिक लेके। ठीक है, उड़ान आपका नाम क्या बच्चे संतोष दोखले। चैप्टर बेटा मैंने लिख दिया, नाम इसका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ऑफ क्लास 10। ठीक है, चलो बाय बेटा, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।